Hello everyone. In this video, we are going to learn about the CMOS inverter. बेसिक मोटिव जो है इस वीडियो का यही होने वाला है कि CMOS इन्वर्टर होता क्या है, कैसे काम करता है और उसके बाद से जो भी उसके PMOS और NMOS रीजन्स होते हैं, मतलब कैसे लीनियर में काम करेगा, कब सैचुरेशन में काम करेगा. So based upon that, we will like do. So yeah, we are going to do about the analysis, and you can say that we will do the analysis of VTC. So what is VTC? VTC means voltage transfer characteristics. So we will see like when we apply this much of voltage or that much of voltage, so how our output is going to behave over this. Okay, so let's get started. So suppose let me draw a CMOS inverter first. So we, as usual, know the upper one is known as pull-up network and the lower one is the NMOS, which is known as the pull-down network. We are providing V in. Good. Now, in the source of this PMOS, we will provide VDD, and in the ground of this NMOS, we will provide ground. In the source of the NMOS, we will provide the ground. Uh, I hope I am clear to you. And this is my V output. Okay. This is my V output. Now, let's see it's working. So let's see it's working. Okay. So suppose I applied a input V in is equals to 0. So and this working is let's say for ideal case. So suppose I apply a voltage of V in is equals to V0. So CMOS इन्वर्टर का काम क्या होता है? CMOS इन्वर्टर का काम होता है कि V out जो होगा मेरा रिवर्स होना चाहिए V in के. Now, but we will think like how actually these things are being done. Suppose V in is 0, then we will do what would be the condition for PMOS, okay, and what would be the condition for NMOS. So if I apply V in is equals to 0, then this PMOS will be on, okay, this PMOS will be on because PMOS is active low. So this get on, and if I apply V in is equals to 0 on NMOS, then it will become off. So it is very quite obvious with the and this CMOS graph, like how when the NMOS will be on and when the NMOS will be off. Because same for PMOS. If this become on, then this switch will be on. So this path will be completed, okay, from high to V out. This path would be completed, and same for NMOS. NMOS is off, so there will be a open circuit. So this circuit will break down here, okay. So there would be no connection with the ground. So ultimately our V out is getting connected to where? VDD, okay. Ultimately our VDD is connected to where? VDD. So यहाँ पे हमें clear हो गया कि how my दिस V in 0 PMOS को ऑन कर देता है, NMOS को ऑफ कर देता है. तो इसका आउटपुट क्या हुआ? तो जो मेरा V आउट है वो क्या होगा? मेरा VDD हो जाएगा. दैट मीन्स लॉजिक 1. मतलब अगर मैंने लॉजिक 0 अप्लाई किया तो मेरे को लॉजिक क्या मिला? 1. सेम केस फॉर, ये मेरा हो गया केस 1. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर केस 2. सपोज अगर मेरा V in कितना था? 1 था. अगर मेरा V in 1 था. नाउ अगर V in 1 है तो मेरा PMOS क्या हो जाएगा? ऑफ. बिकॉज PMOS जो होता है 1 पे क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है. तो अगर ये यहाँ पे जा रहा था तो ये ऑफ हो गया, तो ये सर्किट तो ब्रेक होगी. मतलब V आउट हमारा जो है वो VDD से तो कनेक्ट होगा नहीं. अब जो हमारा V आउट होगा वो डायरेक्ट कनेक्शन किस में होगा? ग्राउंड में. क्यों? क्योंकि V in अगर 1 देते हैं तो जो मेरा NMOS होता है
वो कनेक्ट हो जाता है और वो ऑन हो जाता है। तो ऑन होने का मतलब क्या है कि द सर्किट गॉट completed and this circuit got completed. Okay, so NMOS will be on and V out will get the value of ground. And what we can write is, so I can write here my NMOS will be on, and overall what we get, overall overall we will get my V out is equals to 0. So logic 0. So this is basically my overall working for the ideal CMOS inverter. Let's plot this graph. So इसका थोड़ा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. ओके, मेरा एक्स एक्सिस पे क्या था, वी इन. सो सपोज मेरे एक्स एक्सिस पे क्या है, वी इन है. ओके, जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ. वाई एक्सिस पे क्या है मेरा, वी आउट, जो भी मेरा वी आउट है. तो जब मेरा वी इन ज़ीरो हुआ, यहाँ पे आप ये देखो, जब मेरा वी इन ज़ीरो हुआ तो मेरा जो वी आउट है वो वन मिल रहा है. जैसे ही मेरा वी इन वन होता है, मेरा वी आउट जीरो होता है. सो दैट आई एम गोइंग टू प्लॉट कि जब मेरा वी इन ज़ीरो है, then I am getting a value of 1. Let's suppose this. Okay, and when I my input v in is at 1, जब ये 1 होगा, जब ये 1 होगा, तो जो मेरा v out है वो क्या हो जाएगा, सडनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, सडनली इट विल कम टू 0. सो दिस इज व्हाट, कि अभी 1 चल रहा था मेरा, जैसे ही v in 0 था, और जैसे ही मेरा v in 1 हुआ, तो जो y एक्सिस पे वैल्यू थी वो मेरी x एक्सिस पे लाई कर गई. इसका मतलब v आउट क्या हो गया, 0 हो गया. सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय आइडियल VTC curve. But we know like ideal things doesn't occur. Okay, so there are some other factors which should be considered, and after that factor we will like have a different shape of curve. So ये तो जो भी बातें थी वो थी आइडियली के लिए. सो लेट्स गो फॉर प्रैक्टिकल थिंग. आइडियल बाय हाउ द थिंग्स. ओके, सो अभी तक जो भी बातें करी थी वो आइडियल के लिए थी. अब हम देखने वाले हैं कि जो भी मेरा प्रैक्टिकल थिंग है. ओके, तो जो भी मेरा प्रैक्टिकल थिंग है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे, जो भी मेरा प्रैक्टिकल कर्व होगा. तो वी आर गोइंग टू सी प्रैक्टिकल VTC कर्व ऑफ CMOS. फाइन. अभी जो मेरा आइडियल होता था उसको अगर मैं प्लॉट करूं, सो लेट सपोज दिस वाज माय हाई when my V in is 0. Okay, so my V out is, let's suppose it is logic 1, and when it is, when my V in is 1, then my V out will become 0. So it will remain as it is. And when my V in become 1, so it will become 0. Good, fine. So let me erase it properly, because these are the imaginary lines. Okay, these are only for representation. This is not the actual line. Okay, so this is my logic 1. This is what? This is my logic 1. Okay, this is my logic 0, and this is my logic 1. Okay, so in digital electronics, what we will consider, uh, logic 1 as VDD, means maximum voltage, and logic 0 as voltage 0. Okay, same here for also. So logic 1 would be for high one,
and logic 0 for lower one. Okay, so I will try to mention it when I will draw the diagram of practical one. It will be more clear to you. Now let's say कि what is the nature of that practical one. जो practical हमारा CMOS होता है उसमें CMOS इन्वर्टर जो होता है उसका जो VTC कर्व है वो कैसे बिहेव करता है, तो it will pretend to behave like ideal but it won't actually, and it will goes like this. Okay, so this red curve is representing my practical VTC CMOS curve. Now few things which I would like to mention here is, first one is first one is VDD. Okay, first one will be my VDD, and then the lower voltage. Similarly here on the x-axis also we will consider VDD, where my high voltage is becoming 0. Okay, for practical this was VDD because यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, बट फॉर प्रैक्टिकल थिंग आइडियली तो यहाँ पे VDD आना चाहिए था, बट प्रैक्टिकल में क्या होता है, यहाँ पे VDD आता है क्योंकि जब हमारा कर्व का आउटपुट 0 होगा वहीं पे VDD आएगा, कि V इन जब मैक्सिमम देंगे तो वहां पे मेरा V आउट 0 होना चाहिए। फाइन, इतना क्लियर है। सो ये मेरा जीरो लॉजिक है। लाइन ड्रॉ अब मैं चाहता हूँ, सो दिस इज अ लाइन, दिस इज एक्चुअली द मीटअप पॉइंट, दिस इज एक्चुअली द मीटअप पॉइंट जहाँ पे आइडियल कर्व और ये जो कर्व है वो मीट करता है। सो दिस इज व्हाट, इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि जहाँ पे मेरा वी इन की वैल्यू और वी आउट की वैल्यू बराबर हो रही है। ओके, सो दिस इज माई व्हाट, दिस इज दैट पॉइंट जहाँ पे वी इन और वी आउट मेरे क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, और दिस इज बेसिकली व्हाट, वी डी डी बाई टू, मतलब जो भी हमारा मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसका हाफ होगा ये। Okay, so these are some basic things. Few things more which I would like to suggest in here is, अब हम कुछ चीज़ें ऐसे दिखेंगे जैसे कि VDD है, तो अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम एनालिसिस करेंगे। अगर VDD से थोड़ा सा कम वैल्यू लिया तो सपोज उसको मैं मेंशन करता हूँ। ओके, सो अगर VDD से थोड़ी सी कम वैल्यू है तो सपोज मैं उसको लेता हूँ, आई कैन टेक VOH. Okay, let me write properly. I will write VOH. और अगर जीरो के पास है वो वैल्यू, सो आई विल राइट VOL. ओके, सो O स्टैंड फॉर आउटपुट वैल्यू, कि आउटपुट एक्सेस पे कितना हाई है, आउटपुट एक्सेस पे कितना लो है, तो ये अप्रोक्सीमेटली मैंने एक ऐसी वैल्यू ली जो इसके पास में हो। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ से मैंने कर्व बनाया। ठीक है, सो ये जो वैल्यू है वो क्या है मेरा, ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मिड ऑफ दैट। ओके, ये मिड होगा, एक्चुअली दिस इज माई वॉट, VDD by 2, this would be what, my VDD by 2. So these are some basic things. Similarly जैसे मैंने VOH यहाँ पे ड्रॉ किया, VOL यहाँ पे ड्रॉ किया, मैं सेम थिंग यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ VI के लिए। तो सपोज कि VDD से जस्ट छोटी कोई वैल्यू है और वो वैल्यू है V ऑफ I H। इसी तरह जीरो के पास में कोई एक वैल्यू है और वो है VI ऑफ L। सो दीज आर सम बेसिक assumptions, और यू कैन से लाइक कि कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो चाहिए ही चाहिए VTC कर्व को चेक करने के लिए कि एनमॉस कब किस रीजन में काम कर रहा है, पीमॉस कब किस रीजन में काम कर रहा है। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस VTC CMOS curve. Now in the next video we will see about like how NMOS will operate in different region, and similarly we will go for PMOS, how PMOS is basically will behave, will differently behave, this I can write behave, behave in differently behave in region.
मतलब कैसे अलग अलग तरीके से ये दोनों बिहेव करेंगे. ओके. सो दिस इज फॉर today's videos, and uh, we will see the NMOS working in the next video. Thank you.